I welcome you all to our second session for today. The topic is a newish topic. It is artificial intelligence and how we can leverage it in our profession, with practical examples also being shown here. We have with us two learned faculties who will be taking us through this subject. For introducing the two speakers, I would like to invite C. Chandrachaji, who is also a past convener and co-professor. Good morning, everybody. Good morning. And after the refreshing breakfast, all are set for the technology session. Thank you, convener, for giving this opportunity of introducing the distinguished speakers. First, I would like to introduce CA Mitesh Katira. He is a distinguished professional who has played a pivotal role as a partner of APMH, contributing over 2 decades of expertise to drive the firm's vision and strategy. His extensive background in internal audits, mergers and acquisitions, digital transformation, MIS automation, management dashboards, and ERP implementation uniquely positions him to explore the practical integration of AI into the intricate working of a CA office. Adopting to the evolving landscape, Mitesh and his firm has been at the forefront of cybersecurity, data analytics, AI, RPA, business intelligence, cryptocurrencies, and more. The commitment extends beyond more adoptions. They actively engage in educating and learning about these transformative technologies. CA Mitesh has also been a prominent speaker at various forums, professional trade industry, including distinguished platforms such as the Chamber of Tax Consultants, ICAI, GST, and more. His participation in these forums reflects not only his expertise, but also his dedication to contribute to the broader professional and industrial discourse. In addition to the professional achievement, CA Mitesh Katira is deeply involved and committed to his personal passions, creating a holistic perspective that underscores dedication to the well-being of individuals and communities. His interests range from philosophical pursuits such as Bhagavad Gita and Sanskrit to practical endeavors like natural farming, village empowerment, and homeschooling. And thus, they have a branch in a remote village of Raigad where he operates. So, he can shuttle his time between Mumbai and Raigad. And notably, Mitesh goes beyond personal exploration and actively shares his insights. He writes a regular blog called Krishna Con on LinkedIn, where he covers teachings of the Bhagavad Gita and applies them to the day-to-day business challenges. This initiative showcases commitment to bridging the gap between timeless wisdom and contemporary business practices. The next speaker for the day is CA Dinesh Tejwaniji. He is also a core committee member. He is an accomplished chartered accountant and a successful information technology entrepreneur with 4 decades of experience. He has been instrumental in conceptualizing and building more than 15 ventures in his career, and with 2 of his businesses being acquired by multinational corporations in the past. So we can call him a serial entrepreneur. Currently, he is working as an advisor, tech technology with E&Y. He's also an active member of startups, sharing his knowledge and experience with the next generation of entrepreneurs. He's also part of the IT committee at various tax and accounting bodies, including CTC, WIRC, Tax Friends. And here we have these 2 learned speakers. So before they start their speech, we would request CA Pinky Kedia to please give the memento to Mitesh Bhai and then Jayesh Bhai to Dinesh Bhai, please.
I would like to request our Katira chairperson, Katira ji, to address for 2 minutes. Student conference. It's about the student conference being happening on 15th and 16th of November. गुड मॉर्निंग। वाह, ये एनर्जी चाहिए मुझे 16 तारीख तक तो एटलीस्ट। और हम लोग लास्ट 2 महीने से रात को 1 बजे घर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। सो आई नीड हेल्प ऑफ यू ऑल। ये आपकी अपनी कॉन्फ्रेंस है, सेम जगह पे रीजनल कॉन्फ्रेंस, सेम जगह पे सीए स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस। एंड फॉर जस्ट फॉर योर नॉलेज, हमने कल इंस्टाग्राम में हमारे विकासा चैनल का 10,000 फॉलोअर पूरे कर लिए। जब हमने अपने पैक में हमने इंस्टाग्राम किया था पिछली उससे कमेटी से, उस समय उसमें 6,000 थे और अभी हमने एक साथ मतलब 9 महीने के अंदर हमारे 10,000 फॉलोअर हो गए। हमारे विकासा कमेटी के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग अब और ज्यादा आर्टिकल्स को और स्टूडेंट्स को आप देखोगे तो उनको और मोटिवेशन मिलेगा इतने अच्छे काम करने के लिए। वो भी बेचारे 1 बजे तक हमारे साथ बीकेसी में रहते हैं, दिन में ऑफिस भी अटेंड कर रहे हैं। तो प्लीज मोटिवेट देम विथ मोर एंड मोर रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 2,700 रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स। बट हमारी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है। हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे 2,700 पे, सो वी 3,500। ओके, तो आज डिस्काउंटेड रेट की लास्ट डेट है 500। आज के करेंगे तो 500 है, कल से 750 हो जाएगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन 1,000 है एंड दिस इज ओनली द कमिटमेंट चार्ज। You all can understand if we are doing the conference in NESCO, what will be the setup cost? What will be the food cost for 2 days? And again we are giving student to a kit also. तो आप समझ सकते हो this is only the commitment charge कि उन्होंने पेमेंट किया होगा तो आएंगे उसको करने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी और एक चीज के लिए आप लोगों को धन्यवाद और थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने सबसे अपील की थी पेपर प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए और इस बार रिकॉर्ड हाई 145 प्लस रजिस्टर पेपर प्रेजेंटेशन आए हमारे पास। हर बार 40 या 50 आते थे, इस बार 145 आए। हम लोगों को 4 दिन लगा सिर्फ वो फाइंड आउट करने के लिए कि विनर कौन होंगे। इवन कल मैं ट्रेन में भी वही कर रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इतने अच्छे प्रेजेंटेशन है ना कि हमें डिफिकल्टीज हो रही है कि करने में कि पॉइंट से डिफरेंस है। खाली जयेश भाई ने देखा ही है, मितेश जी ने भी देखा है कि कितना अच्छा लिखा है बच्चों ने और कितना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है पीपीटी वगैरह। तो हमें खुद से मतलब हमको लग रहा है कि हम 2 में से एक को डाल रहे हैं तो दूसरे से इनजस्टिस कर रहे हैं। बट उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिर्फ एक को हर टॉपिक में सेलेक्ट कर सकते थे। तो जिसके भी कोई नहीं सेलेक्ट हुए हो तो प्लीज हमें माफ करना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत टफ जॉब था। कल रात को 11:30 ने वो फिर ब्लॉक किया कि नहीं अब तो करना पड़ेगा क्योंकि जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको रहने का और इस ट्रेवलिंग का टिकट वगैरह भी करना रहेगा और कभी तो ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि कौन फर्स्ट है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सबने अपने अपने आर्टिकल्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया एंड देन पार्टिसिपेटेड इन दिस। सो थैंक यू एंड अगेन आई एम सेइंग कि 15-16 को और ज्यादा आर्टिकल्स को स्टूडेंट्स को भेजिए और आप लोग भी आके देखिए कि किस तरह से आप लोगों का फंक्शन हो रहा है। अभी घर की शादी होती है तो घर के लोग ही नहीं आएंगे तो शादी में मजा नहीं आता है। तो ये आप यही समझ लो कि आपके घर की शादी है और आपको सबको आके वो शादी संभालनी है। सो थैंक यू, वी विल मीट देयर and I don't want to take more time of Mitesh because this is the new generation and हमने AI के भी 2-3 टॉपिक 3-4 टॉपिक तो हमने AI से बेस ही रखे हुए थे, इसीलिए हमने मितेश जी को दिया था कि वो पेपर प्रेजेंटेशन और वो चेक करने के लिए। तो सर कैसे थे हमारे बच्चों के प्रेजेंटेशन? ये खुद भी बोल रहे थे बहुत अच्छा बनाया बच्चों ने। तो थैंक यू एंड वी विल मीट देयर ऑन 15 and 16। थैंक यू। कौन सा उसमें चाहिए रहेगा तभी लेता हूँ। Control is not required. You can only do it.
At the outset, I would like to thank the JP Nagar Study Circle for continuously calling me. I think year on year, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है. And there is a lot of patronage and interest in technology of our members also, which is a very highly appreciable act in that sense. Pinky ji, apni, Bagaria ji, all these people have been like, regularly in touch and encouraging me to talk on this topic to a lot of professionals. Today being CP focused meeting, I saw that a lot of people who were really interested only stood back. Rest of them took nice and tough breakfast and left for the day. But that's all. That's how it happens. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीमा जी, पूर्वी जी, अंकुश भाई, जयेश भाई, MP Reddy sir was also involved when I was coming regularly. Now today I couldn't see him actually. So a lot of these members have been showing interest in the topics of technology and whatever I have been doing for a while now. So IT जो है वो अपने आप में एक ऐसा विषय बनते जा रहा है जो प्रोग्रेसिव लोगों को बच नहीं सकते उससे, right? We will have to go with IT. We will have to follow the trend of IT that is going on, right? When you look at all big conferences, all big activities that ICAI is conducting or any other world forum is conducting, be it OCA, be it GloFact. अभी GloFact हुआ गांधीनगर में हम लोग गए थे. Almost 30-40% of the time is allocated to discussions regarding AI, robotic process automation, and other technology related topics over a period of time. We could see that a lot of participants like in other accounting professionals, there is a connect between accounting and IT. And if the professors suddenly start communicate with their MSME clients, they will change the entire landscape, and that time they will remember Jerry or whatever. That connect will be very thankful in the connectors or linking partners for them with their clients knowingly or unknowingly. कभी कभी हमको पता है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, कभी कभी हमको पता नहीं है इसलिए हम लोग कर रहे हैं. Although as a disclosure, but the point I am trying to make is significant big, large IT company, the accounting community very seriously, and they are trying to say that something is going to happen. If it will happen here, right? जैसे ESG है, तो ESG के लिए हम लोग इंजीनियरिंग को नहीं देख सकते, हम लोग MBS को नहीं देख सकते. कहीं ना कहीं स्वीट स्पॉट आकर के in between myself, उनका
remarks, I just want to take you through the practice and how the practices are slowly moving towards AI and how they are transforming their activities with the help of AI. And here we are not going to talk about very hi-fi coding or any kind of activity which you don't understand. For example, you don't understand Python. So we are not going to talk about Python. You don't understand SQL. We are not going to talk about SQL, right? We are going to talk about very, very practical things, hands-on things, very simple things which you can do, and you can transform the practice, right? So it is going to be very practical. So potential areas that I have identified which will actually help practices to transform. And I also run a practice around 100 people team and 2-3 offices across the globe. So I have been finding out what are the potential areas which can help the practices to fast track their growth journey or fast track their relevance and keep themselves at a pace with the changing environment and changing global situations. So look at few things like technical is one area, like for example IFRS or ESG or a technical stuff like your tax, your GST, all these come into technical area, right? So your accounting or your income tax, your TDS, all these things come under technical bed or technical areas that we will discuss here. कि आपको technical काम करने के लिए AI कैसे काम में आएगा. Second is communication. So how you will speed up or smoothen your communication abilities with the help of AI, and how you will reduce your time and energy to write right spellings or to write right grammar or to write right terminology or to write right tone. ये सब काम आपका कैसे AI कर ले. तीसरा है marketing. Of course, we are CA practice. In practice, we always are thinking that marketing is a taboo. We can't do it. अभी अपना ethical वो चले गए, अच्छा हुआ. So the session was over. So we were all discussing solicitation and issues regarding solicitation and why solicitation is harmful and how we can grow practice without doing any kind of solicitation and so on. But there is some element of marketing that always remain, right? It is very subtle in nature, but it continues. Like we took photograph here. The convener was also taking mileage and we were also taking mileage. This is reality. There is nothing to hide about, right? The point is everyone is trying to do some activity or the other. Now I will go and post this in LinkedIn and I will say, 300 people came, 250 went away, but I will talk about 300 only. So that is how life is. This is the reality. How can you, try to run away from that? तो मार्केटिंग के लिए AI कैसे हेल्पफुल होगा. देन ह्यूमन रिसोर्सेज, हमको लोग चाहिए. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के तारीख में, इफ यू आस्क ऑल द स्मॉल प्रैक्टिशनर्स, ऑल द मीडियम साइज प्रैक्टिशनर्स, इवन द लार्ज फर्म्स, एवरीवन इज वरीड अबाउट व्हाट इज मैन पावर. हम मैन पावर कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे काम. साथ में मिल करके हम लोग काम करना है, टीम वर्क करना है. आर्टिकल स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे लोगों को, अच्छे एम्प्लॉय असिस्टेंट्स नहीं मिल रहे, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं मिल रहे. ये बड़ा एक चैलेंज है. तो AI कैसे इसको आपको हेल्प कर सकता है इम्प्रूव करने के लिए. एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी. आपके फर्म में चाहे कम से कम टेक्नोलॉजी हो, लैपटॉप तो होगा ही, डेस्कटॉप तो होगा, मोबाइल फोन तो होगा, एक्सेल तो यूज कर ही रहे होंगे, वर्ड तो यूज करते ही होंगे. तो इसके अंदर हम लोग क्या लेकर के आ सकते हैं जिससे हमारे लोग क्विकली इसको सीखे, हमारी टीम, हम भी उसको क्विकली अडॉप्ट करें और उससे हम जो है वो अपना काम स्पीड अप करें, अपने काम को मैक्सिमाइज करें. ये 5 पोटेंशियल एरियाज है जिसके बारे में यदि हमने ठीक से काम किया तो वी कैन immensely benefit our practices on day-to-day basis and make fill the practice with a superpower which was non-existent, which we felt in past कि इसके लिए consultant रखना पड़ेगा, which we felt in past कि इसके लिए कोई specialist को रखना पड़ेगा, which we felt in past कि ये करने के लिए मेरे को किसी से collaborate करना पड़ेगा. अभी ये सारा जो problem है ये AI आपका ले लेगा, so that you can easily and quickly adopt to this. ठीक है.
So what are the benefits of AI? Let's quickly look at the benefits कि ये क्यों महत्वपूर्ण है. ठीक है, apart from having mind like human, what all does it has? It has no mood swings. इसको कोई mood नहीं रहता है. So it doesn't have Sunday mood, Saturday mood, Monday mood. You know, like us. I had Sunday mood, so I didn't wear a blazer like sir. Right? I said कि भाई अपना सेशन है तो कैजुअल पहन के ही चलते हैं. ठीक है, आईटी पे बात करना है तो चलेगा, कोई कोई मायने नहीं रखता है क्या पहन के जा रहा है. मतलब आपको कुछ तो ठीक से पहनना है. पॉइंट इज इतना मैटर नहीं करता है. So I tried to be casual about this, and I found that Dinesh is also casual. So I asked him what. So Sunday यार क्यों हम लोग लहंगा पहने, right? So that is how he presented. So mood is something that is human, but the AI doesn't have any mood unless you feed mood into it. आप उसके अंदर मूड डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. ठीक है, लेकिन आदमी के अंदर आप मूड डाल के निकाल नहीं सकते. Like sometimes our wife says चलो आज बाहर खाने जाते हैं, तो what we say आज मूड नहीं, right? Like that the AI will never say. It will say these are the choices, this is the menu, you can go and select it, these are the prices, and if you go in Andheri India, this is the overall cost that a family will have to pay for having a dinner outside. But you will sum this all up and say कि साला 3-3.5 का चूना लगाने वाली है, तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं मूड नहीं है, period. Right? So this is a thin line between AI and person. ठीक है, so I've been reading a lot of spiritual texts, so there is a difference between mind and intellect. So whether the AI has mind or it has intellect or it has both is the question that we were debating. So the point is the AI has intellect, but one can fill mind into intellect whenever required, and whenever not required, remove the mind. Right? So the second point is improved quality of drafting. It can draft very nicely. Right? We sometimes feel bored and we draft very short. अभी तो बच्चे young generation जो लिख रहे हैं, this means that I am also grown up, is that they write WhatsApp messages like you can't read, you and I can't read that, because they have kind of changed the entire lingo, right? Because they feel bored, they don't want to write long things. So if write लिखना है तो RYT लिखते, WRITE ऐसे नहीं लिखते. Same RYT is right, that is their spelling, right? So certain things have completely changed because of people's mood. But the AI helps you to redraft things in a systematic manner because you feel bored or lost in writing. तो ये अच्छे से आपको ड्राफ्ट करके देगा, बढ़िया ड्राफ्टिंग करके देगा. फिर इसमें कुछ निकालना है डालना है अपना कॉल है, बट द पॉइंट इज एक काम तो अपना करके दे देने. फिर थर्ड इज speed of content creation. It can create speed. It can create content at a magnificent speed, right? ये फटाफट करके दे सकता है आपको. ठीक है, तो time taken by human being to write an article in say 2 days, 3 days, 5 days, and AI can write an article within 5 minutes, right? So that is the speed at which it can create drafts of articles. And imagine it writing replies to your show-cause notices or replies to your 143(1) demand notice, for example, right? Or imagine writing audit reports for you. Yeah, absolutely. Imagine writing scope letters for you when you want to send something to the client and he says internal audit करते हैं, तो हम लोग पीछे देखते हैं करते हैं. So the guy says बोल दे करते हैं, फिर देखेंगे क्या है. Then we take up the assignment. These guys tells us ठीक है, फिर मेरे को एक आपका expression of interest लिख के भेजो कि आप कैसे करोगे, कितना फीस लोगे. Then we have to call up a friend कि भाई ते करियो जे कहीं आओ. All these steps are removed suddenly. It can do it very fast and without involving any of the क्या बोलते हैं वो केबीसी में एक कॉल फोन में फ्रेंड नहीं करना पड़ता. ठीक है, सो आइडियाज टू थिंक थ्रू, बहुत सारे आइडियाज देते हैं अपने को सोचने के लिए. ठीक है, जैसे मेरे सामने एक बंदा आके बैठ गया एंड वो उस बंदे को
मुझे एचआर की लेडी ने टीम्स पे मैसेज किया कि सर इसका इंटरव्यू लेना है और ये जीएसटी टीम में ज्वाइन होने वाला है और ये कंप्लायंस करने वाला है और ये बीकॉम पढ़ा है। अब मैं तो ब्लैंक हो गया बिकॉज आई डू बिजनेस एडवाइजरी, आई हैव नथिंग टू डू विद जीएसटी। सो but since I am kind of managing the human resources and all, so she sent that guy to me. So I asked ChatGPT कि भाई क्या क्या सवाल पूछना है इसको, ठीक है, because I didn't know the questions and I looked very professional while asking the questions, and that lady or that person was, appreciative about my quality of questions. उसको मालूम नहीं ना, लेकिन उसको अभी ज्वाइन करने के बाद सिखाएगा। So that is the fun of doing learning this, right? So ideas to think through, बहुत बार हमको आइडियाज नहीं आते क्या बात करें, इस टॉपिक पे क्या बोले, क्या करें। कल किसी ने मुझे पूछा, 3 बार मैसेज आया, सर आपका वो भेजो, क्या प्रोफाइल भेजो। Now I honestly thought of making something, थोड़ा ड्राफ्ट किया फिर छोड़ दिया, because I was amidst a small village activity that we are doing in Roha. So I was busy with that. So again and again someone was sending message, someone was calling. I was feeling embarrassed कि ये लोग मुझे फोन कर रहे हैं, इतना senior लोग, chartered accountants calling me. आज तो I was embarrassed more when I saw all the committee members actually serving other people. Amazing work, solid. So ये किधर देखा नहीं मैं। So these guys are very committed. I can't expect more commitment. I have been convener of Ghatpur Study Circle in 2009-10, and we did nothing. Instead only दादागिरी करते, कन्वीनर हो गए तो भाई काम थोड़ी करना है। We used to say चले लेके आ, दे इसको, like that. And if something didn't happen, we used to blame that guy. But here I saw the dedication, commitment. सुबह Sunday morning में अपने घर वाले को हम खाना नहीं खिला रहे। Amazing. So ideas to think through, correct tone of communication. We sometimes miss out on tone of communication. हम लोग क्या है, थोड़ा over communicate कर देते हैं, under communicate कर देते हैं. That is a risk, right? Like I am talking to you, in the mood swing, I would have done something wrong. I would have hurt someone. So ये risk बहुत बड़ा है. लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करेगा, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा जल्दी, unless and until you want it to hurt the other guy, right? जैसे हमने क्या किया, I will give you live examples, okay, because that is the topic. So हमने अपनी ऑफिस में एक लड़की बैठती है जो दिन भर लोगों को फोन करके बोलती है, सर आपका पैसा बाकी है। Obviously because CA's or whatever consulting fee is like 0.01% of the PNL overall turnover value. So sometimes it is ignored and sometimes it is overlooked, either or. So we have to continuously tell them that our our fees are remaining. Your last year का audit हो गया, इस साल का भी हो गया, अभी कितना मतलब what is the time frame that we are targeting. So that girl used to talk very rough to people. So I told her that you ask ChatGPT, अगला फोन में क्या पूछ रहे हैं. So the tone became suddenly very good, right? And the client not only liked the tone, he paid the money, he gave us new services also. Because what happened is she started saying that, sir, your this small fee spending, small, very small, in front of you, and our firm has now started this new area of work, and I'm sure that will be useful to you, and if you feel like, I will connect you to the right person in the team, right? That itself gave a lot of boost to that particular new team which was building up and which was saying कि हम लोग इसमें ये करेंगे, उसमें वो करेंगे, जैसे MIS बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, तो सडनली कोई पूछ नहीं रहा था इसके बारे में, बट someone told, so सर अगर आप ये देखोगे रोज, अगर आप कैश फ्लो रोज देखोगे तो वो बढ़ेगा, ये आपको पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, whatever you see it grows. जैसे हम लोग खेती करते हैं तो वी ग्रो दी ड्रम स्टिक्स, तो ड्रम स्टिक्स का पेड़ जो है वो हमारे खेत में आदिवासी लोग काम करते हैं, तो आई सेड कि उधर पुणे में लगाओ, ऐसे नहीं होगी, यू हैव टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू,
and see every day the drumstick, then it will grow. Similarly, in business, when so that girl typed that I want to sell dashboard services, right? So along with asking for collection. So at ChatGPT gave a very nice answer. It said that you tell them, sir, do you know that whatever you see is whatever that grows. Do you want to grow your cash flow? So he said yes. So we have a technique, right? So the point I'm trying to make is it can do a lot of wonderful things for you. Correct tone, predictability. It will not only give past things. पीछे करो. ये देख लेंगे तो आगे का गड़बड़ हो जाएगा. So not only past things, it will give you future also. It will tell you certain things of future, right? And it will tell you okay, if the sales in last 3 years has grown at average 20%, then what will happen in next 3 years in this particular industry? For example, iron and steel industry is growing at 15% per year sales. Then what will happen in next 3 years? है ना? So ऐसे कुछ आंसर्स भी वो आपको हेल्प कर सकता है. हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाएंगे आपको. But the point I am trying to make is it can do certain predictable things also. Of course, decision is yours whether you want to rely on it or not. It is your decision. But it can give, like for example, weather predictions. Nowadays, the people have started asking ChatGPT के मुंबई के अंदर में बारिश कब होगी अगले सीजन. And it gives a prediction. Although there are other apps also who give prediction, but this also gives a lot of prediction about things which are going to come in future. Like for example, a Renault car is having these models. Now, which model will come up next? And generally, it will try to resonate the philosophy of the entire car manufacturing industry and the consumer, and it will kind of give you an idea as to what will come out in the next model or what will be the new features that will be added, right? So ऐसे बहुत सारे predictability के बारे में भी हम लोग इस पे बात कर सकते हैं. So let's look at the next slide where we talk about what is prompt engineering. तो ये करने के लिए करना क्या पड़ेगा अपने को prompt करना पड़ेगा. Prompt मतलब हमको सवाल पूछना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम ये कि सवाल अगर हम सही नहीं पूछेंगे तो जवाब सही नहीं मिलेगा. ठीक है. सो ये सारा जो गेम है एआई का वो प्रॉम्प्ट पे रुक रहा है क्योंकि लोगों को सही प्रॉम्प्ट करने को यदि आएगा तो एआई आपको सही उत्तर देगा. सिंपल है, राइट? इट इज प्योर इंग्लिश. देयर इज नो नीड. अच्छा, इंग्लिश इज आल्सो ओके, बट यू शुड आस्क राइट क्वेश्चंस. If you ask right questions, it will give right answers. Now, what all should be included in it? Before we go to this, how many of you have tried using ChatGPT? Wow, almost 80% of you have tried using ChatGPT. How many of you have been using it daily? 20% of 15% roughly are using daily. Great. And how many of you are using every hour? Wow, there is one person who is using it every hour. Great. So I think this is a very good analogy which says that हम किसी भी चीज के क्या बोलते हैं उसमें पड़ जाते हैं मोह में. हाँ, और वो नहीं ऐसे नहीं. I am saying other way around, where we go to a mall and we see a very good technology gadget. Like a gaming equipment or something, and we buy it, keep it at the home, and then we don't use it for years together. Then suddenly we remove it and see it has become empty. Right? Similarly, आपको पता होगा तो एक जमाने में वॉकमैन करके आता था. उसके अंदर कैसेट, सबसे छोटा सा वो रहता था डिवाइस, इसके अंदर कैसेट डाल के कान में सुन सकते थे. So many people used to buy the Walkman, but only its analysis says that only 20% actually effectively use the Walkman. Rest of them just bought it and kept it in their cupboard or used it very infrequently. कभी कहीं गए तो use कर लिया या ऐसे. So I am trying to say that these technologies are made for day-to-day, hour-to-hour use. They are not made for keeping it in the cupboard or just telling कि मेरे पास भी है ना, iPhone मेरे पास भी है.
ये मेरे पास इसको रख के कुछ काम नहीं है, इसको यूज करेंगे तो काम बनेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं बनेगा, राइट? सो what is prompt? किसी कोई अगर बताएगा तो it will be more interactive. हाँ, pose what question you pose to uh, ChatGPT or any other AI engine, right? Sorry, so यहाँ पे क्या है, define your objective. आप अपना objective ठीक से बताओ. Second, keep it simple. Don't ask complex questions. It will simply understand. उसको बहुत पूछना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा. ठीक है, be specific. आप जो पूछोगे उसमें specific हो जाओ, है ना? जैसे आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट चाहिए और वो ड्राफ्ट आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए चाहिए, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में है, ये अगर आप बताओगे तो वो सही जवाब देगा. अगर आप उसको सिर्फ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट पूछोगे तो वो सही जवाब नहीं दे पाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यदि उसको कॉम्प्लिकेट करके पूछोगे, इंटरनल ऑडिट एज पर इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सो एंड सो एज पर दिस दैट, तो कंफ्यूज हो जाएगा, स्टैंडर्ड वांडर्ड ढूंढने लगेगा एंड इट विल थ्रो समथिंग वियर्ड. सो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू कीप इट simple as possible. Third is define, iterate and refine. आपको धीरे धीरे उसको रिफाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको दूसरा तीसरा चौथा सवाल पूछ के ठीक करना पड़ेगा. Because sometimes it may give you weird answer, but if you want a correct answer, we can keep on refining it. Then last is avoid leading questions. So if you are seeking an unbiased response, avoid phrasing that might lead to model in a particular direction. आपको अगर कोई particular direction में नहीं लेकर के जाना है, कोई bias नहीं create करना है, तो आप वैसा कोई bias वाली बात उसमें डालो मत. यदि आप डालोगे तो then it will get confused and lost. ठीक है, लास्ट इज टेस्ट मल्टीपल वेरिएशंस. एक वेरिएशन से संतुष्ट मत हो जाओ. जनरली वी हैव अ गूगल हैबिट, आई कॉल इट एज गूगल हैबिट, दैट गूगल को पूछा, उसने जो पहला जवाब दिया वो सही है ना, यह मान के चलते हैं. और गूगल का एक चीज आपको सीक्रेट बताता हूँ, पहला 3 जवाब जो है पैसा लेके देता है, तो उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है किसी को पता नहीं है, लेकिन गूगल को एक चीज पता है कि दीज आर पेड people, so they will always come on top. So Google makes money because of Google mindset that we have, right? What is that mindset? That mindset is to choose the first 3, the top 2 or 3 at the most. So similarly in the ChatGPT we have to look at few variations or whatever AI engine we are using and arrive at our own version which we like the most to be presented to people, right? तो ये कुछ बातें हैं. मैं एक सैंपल बताता हूँ आपको, कल ही का जो हम लोग ओके ये कर रहे थे टू रिफाइन थॉट प्रोसेस, राइट? सो आई विल जस्ट शो पिक 2-3 सैंपल्स. सो हाँ, ओके, यू हैव टू पुट इट नेक्स्ट. हाँ बताओ. So I was trying to draft the profile जो मैंने आपको बताया, तो उसमें I will quickly tell you that I just put few things and I tried, then I tried to improve it, again improve it, again improve it. 2-3 राउंड में फिर वो ठीक आंसर आने लगा. So that what happens is you have to look at all these points, like whether the objective is set correctly or not, whether the thought process is correct or not. अगर वो हो गया तो आपका आंसर जो है वो सही आएगा. So for example, we can start a new prompt so that this doesn't get disturbed. पहले वाला जो है नहीं, इसमें ही प्लस करना साइड पे. हाँ, this one, okay. So here I said that write a profile for presenting in a study circle meeting. Okay, this is what I write. This is specific. Do you feel? Can you give specific answer? Ah, correct. So then these questions need to be answered, like whose profile? So write a profile of CA Mitesh Katira, for example. Okay. So this will give a specific answer. Now further we will make it specific by saying that a CA study circle. It is not just a study circle. It is a CA logo study circle. So it will make the objective very clear. Now what all I want to include in the profile should also be mentioned because it doesn't know who is Mitesh Katira, right? So I have to specifically say
some few things. So I will make a collection that 20 years experience. नीचे में 2-3 point लिखूंगा. Include हाँ. So it will put 2-3 point नीचे लिखूंगा. ये enter करके. Wherein I will say that put 20 years experience, for example. Talk about I am a partner with APMH firm. Okay. Or talk about I spoke in various study circles. Example. Okay, so I'm just keeping it simple for all of us to quickly है ना. तो ऐसे करेंगे तो it will create a quick draft, and then we can not rely on this draft. We have to give it more prompts to make it simpler or easier to understand and evaluate, right? देखिए कितना अच्छे से उसने बना दिया. जहाँ पे वो बोल रहा है स्पेसिफिकली उसने नेट पे जाकर के कुछ बातें चुन ली, because it's a paid edition of ChatGPT. We generally use free. So this actually pulled out certain things about my professional achievements, certain things that I have been doing in the firm and so on. तो काफी सारी बातें इसने खींच ली और यहाँ पे अवेलेबल करा है. लेकिन इससे मुझे मेरा पर्सनल एस्पेक्ट्स लाना था. जैसे I write a blog on, say, Krishna Kon, for example. Okay, so these are certain personal items which it forgot, right? So I can say that in the above blog, in the above write-up, please append these few things, है ना. तो ऑटोमेटिकली वो append करके ऐड कर देगा उसके अंदर. तो पर्सनल एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर लेकर के आ जाएगा. Now this can directly go to the convener. Right? So I did what I wanted to do, but I didn't waste in drafting. You know, but I gave a nice prompt which was easier for the ChatGPT to understand, right? And it made the required profile. This is just a small example. We can take up a lot of, we can even make it more sophisticated, like 2 पैरा में लिखो, 1 पैरा में लिखो, tone simple रखो, tone थोड़ा corporate style से दे दो, तो corporate style से दे देगा. So whatever you ask, it will try to refine and give you a proper personal interest में उसने teaching add कर दिया, ये add कर दिया. So it is doing lot of thinking to make it very pointed and perfect, right? And nice thing is it divided my profile into personal and professional. See that, right? तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत important है कि आप कैसे prompt करते हैं. राइट. सिंपल सब लोग के पास है, ये फ्री है ऑलमोस्ट. कुछ पेड पार्ट्स इसमें है जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू कैन क्विकली यूज दिस. सॉरी, पेड एंड I will discuss that. Again, I am not representing ChatGPT or not trying to sell anything on this, right? But I'm going to tell you certain differences as to what it can do and what it can't do. So वापस PPT पे आ जाओ. So this is, I just wanted to quickly tell you what it can do. So important और एक important part क्या है prompt के अंदर, take a persona. बहुत important है कि आप कौन हो वो उसको बताओ, right? Write an audit report for an internal auditor. तो specific persona के लिखना है, उसको समझ में आना चाहिए, है ना. तो it will not write something that an audit committee should write to the board. It will write an auditor report as per the auditor. तो आपको सही persona मिलेगा. फिर second is लेंथ भी आप डिफाइन कर सकते हो. आप बोलो 1 पेज का लिखो, आधे पेज का लिखो, 2 लाइन का लिखो, 5 लाइन का लिखो, whatever, right? You can give specific objective to it. यहाँ पे मैंने एक prompt कैसे होना चाहिए उसका पूरा फ्लो कर लिया. Relevant for information purpose. राइटिंग स्टाइल में आप टोन लिखो, कैसा टोन चाहिए, एंड ऑडियंस लिखो किसके लिए चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड को एड्रेस करते हुए रिपोर्ट बनाना है, तो स्पेसिफिकली बोर्ड को एड्रेस करते हुए रिपोर्ट बनाया, राइट. सो इस तरह से आप प्लीज इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो आप एंटरप्रेन्योर हो, सोशल वर्कर हो, बिजनेस कोच हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, उसका पर्सोना देके उसको समझो. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड्स. Find, research, create, understand, improve, compare, ये सब यूज करो. Don't just put what you want to ask. Ask specific. Find बोलो तो find करके देगा. Research बोलो तो research करके देगा. So it will be looking like a research article.
क्रिएट बोलो, इट विल क्रिएट समथिंग ऑफ इट्स ओन। अंडरस्टैंड बोलो तो वो कोई डेटा को समझने में आपको मदद करेगा। जैसे एक शो कॉज नोटिस आया आपको, राइट, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी में आती है, तो यू टेल अंडरस्टैंड दिस शो कॉज नोटिस एंड टेल मी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। 150 पेज का शो कॉज नोटिस आपको 5 लाइन में लिख के दे देगा, 5 पॉइंट पे ध्यान देना है, बाकी छोड़ दो। हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बहुत काम करते हैं, तो वी गेट दी बिग क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, राइट, दोज आर इन पेजेस, 300-400 पेज का क्लेम आता है। अब वो क्लेम आने के बाद हम लोग उसको एनालाइज करने के लिए 2 दिन लगाते हैं। हमारे बच्चे लोग बैठ के देखते हैं, वो क्लेम पढ़ते हैं, उसकी जो वाउचर्स रहते हैं वो निकाल के देखते हैं, उसके डेट्स के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट में चेक करते हैं, ये सब काम करते हैं। बट द पॉइंट इज दिस एक्टिविटी बिकम्स वेरी लेंथी, 2 to 3 days it takes to analyze one claim, because those claims run in hundreds of crores and in hundreds of pages sometimes. So what we did is we started telling them that you have to give us in readable PDF, otherwise we will not accept. And we used to upload this readable PDF into ChatGPT and tell it कि इसमें से synopsis निकाल के तो एक claim tenable है कि नहीं है। मोटा मोटी वो बोल देता है कि एक claim tenable है subject to 2-3 conditions. Amazing capability, right? So this work someone would have done for 2-3 days, and ultimately his boss would have sat on his head and said कि boss तू समझाया कि नहीं समझाया 2 दिन के बाद भी तेरे को इसने। और IBC में तो time limits, right? So I am trying to tell you that how powerful this can be for your office and how transformative it can be. You can say improve. For example, we have this habit of writing knowledge blogs on our website, right? Now I tell these people in the team, juniors, कि आप कुछ लिख के लेके आओ ये टॉपिक के ऊपर, and then for example we do UAE corporate tax or we do Saudi zakat, so these laws are very different than Indian laws, so I tell them कि ये zakat के ऊपर 15 पॉइंट का एक समरी बनाना है, and then I take it and tell ChatGPT please improve. So it will do whatever is required to do to make it look useful, right? So इस तरह से बहुत सारा ये काम कर लेते हैं। So output पे भी आप काम कर सकते हो, tone पे काम कर सकते हो, style पे काम कर सकते हो, तो ये सारे factors बहुत important हो जाते हैं। One or two next दीपेश। Audience ये बहुत important है, आप किसको लिख रहे हो, बोर्ड को लिख रहे हो, बार्गेन हंटर को लिख रहे हो, इंपल्सिव बायर को लिख रहे हो। हम लोग तो इंपल्सिव बायर को नहीं लिखते जनरली, बट वी राइट टू लॉट ऑफ बार्गेन हंटर्स हु विल ऑलवेज ट्राई टू से थोड़ा काम करो ना सर, आपका बहुत महंगा है, ये बाजू वाले का इतना में 1500 में रिटर्न प्राइस कर रहे हैं, 2500 ले रहे हो, क्या है। एनवायरमेंटली स्केप्टिक, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, टाइम पुअर कस्टमर्स, इमोशनल कस्टमर्स, लॉयलिस्ट, आप किसको लिख रहे हो, स्पेसिफिक बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, सो टूल्स, चैट जीपीटी करके जो टूल है ये सबसे सिंपल और अच्छा टूल है, आप इसको ही सिर्फ यूज करोगे तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। बिलीव मी और नॉट, इट इज वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स बातें करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग चैट जीपीटी बेच रहे हैं आप खरीदो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू से दैट हाउ यू कैन एनेबल योर ऑफिस एंड मेक यूज ऑफ इट फ्रॉम डे 1 और आवर 1 फॉर दैट मैटर, राइट। परप्लेक्सिटी करके एक दूसरा टूल है जो अपना एक इंजन बनाता है सिमिलर टू चैट जीपीटी। बार्ड इज अ गूगल एआई and there is one image creation AI which I use frequently in writing blogs because I can't make images by myself. I can't use Adobe or something like that, Canva, so it will actually make images for me. You can give कि मुझे एक पेड़ बनाना है जो उल्टा है, जिसके मूल ऊपर है और डालियां नीचे है ना। जैसे हम लोग गीता में 15वें अध्याय में देखते हैं तो वहां पे ऐसा है कि ऊपर मूल है ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, नीचे मूल है ऊपर शाखा है, तो कैसे लिखेंगे। तो मैंने उसको बोला कि बाबा एक बना के दो जिसमें ऐसा पेड़ है ना, तो एक मेड इट। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिएटिव, राइट, इट कैन डू लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क। नेक्स्ट, दिनेश जी गुस्से से देख रहे हैं अभी। डिफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, तो रिस्क क्या है कि हम लोग डिफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। हमारे बच्चे लोगों को बोल दिया बेटा चैट जीपीटी वापर, सत्यानाश कर सकता है।
So be very careful that they don't overuse this. That is the biggest risk, right? And they will rely on it like Google. That is the another big risk. Your application of mind, your awareness, your alertness is very important. Otherwise, you will throw something ridiculously different than what you wanted. So please be very careful. Second, it is not up to date. The model that we are using 3.5 is not up to date. It is up to date up to some 2022 or something, September 2022. तो आप इसको कोई नया legal question पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा. ठीक है, लीगल उसको पूछो ही मत कोई. टैक्स लॉज में इसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन उल्टा कर सकते हो. आप उसको ट्रेन करो उस मॉडल को. वेरी यू पुट देयर शो कॉज नोटिस एंड टेल हिम कि ये शो कॉज नोटिस पढ़ के बताओ, या ये शो कॉज नोटिस के लिए ड्राफ्ट रिप्लाई बनाओ. उसमें टेक्निकल पार्ट आप ध्यान रख लो, बाकी वो सब देख लेना, राइट. बट डोंट आस्क हिम स्पेसिफिकली सेक्शन 43B1 ए में जो अभी अमेंडमेंट आया है वो क्या है, ऐसा सवाल मत पूछो. बिकॉज द पॉइंट इज योर मॉडल इज नॉट ट्रेन्ड फॉर यू. It can be trained, but the point is today it is not trained. In fact, the biggest risk of AI is to legal profession, because the legal profession is all about drafting, all about arguments, all about communication, right? ये पूरा का पूरा खत्म कर देगा. And there are certain Dinesh ji will discuss about certain applications on the legal front and accounting front that have come in, which can change the entire landscape. But the point I am trying to make is certain things like ChatGPT, look at the update and don't ask any direct legal questions. Otherwise, it may result into wrong information. Incomplete understanding. Sometimes it may not have understanding of the industry, the business, the specific area that you are talking about, and it may throw some random replies. And last is data theft. हम लोग क्या है उस चाह में कि पूरी as it is copy paste करेंगे, जैसे मैंने प्रोफाइल कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, ऐसे करने जाएंगे तो हम सारा डेटा उसको फीड कर देंगे. और वो डेटा जैसे हम फीड करेंगे उसको पूरा राइट है. जब आप साइन अप करते हो तो अभी बोलता है कि मैं सब स्टोर करने वाला हूं, जो भी करोगे तो सारी हिस्ट्री को स्टोर करेगा. और हो सकता है कई गलत जगह पर वो रिवील कर दे उसको. जानबूझ के नहीं करेगा, परंतु किसी ने पूछ लिया. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत सेंसिटिव पोस्ट मर्जर एक्विजिशन का केस कर रहा हूँ. एक आयरन एंड स्टील कंपनी है, and that company is still not the acquisition is not still over, but an article when asked for the last 5 साल का बैलेंस शीट का थोड़ा करके एनालिसिस, he starts using ChatGPT, right? And the risk is this is a private company and we don't want to tell that this merger has already happened and the funding has already come, and there may be a chances that in next 6 months after finishing the legal formality the new management will take over. तो ऐसी स्थिति में मैं वो डेटा वहां नहीं फीड करना चाहिए. Otherwise, what will happen? Someone may ask about the same company and it may get the entire balance sheet, which was not available to you, right? So please be careful about what data you put in it, to what extent you put in it, and to what sensitivity. That is completely your call. फिर आप बोलोगे ChatGPT is doing data theft. No, it has asked your permission. It is using what it is allowed to use. If you are giving him permission, you can't run away from it. That is why large companies like Genpact and others have the what you call the models installed in their own environment, and they make sure that the data doesn't go to somewhere else because they train these models. अभी दिनेश जी बात करेंगे कि EY कैसे ट्रेन कर रहा है अपने मॉडल्स को. मतलब every firm, next slide पे जाएंगे, what makes AI unique is trainability. ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं बिकॉज हम तो क्या कर रहे हैं, जो एआई में एबिलिटी है उसका एज इट इज यूज कर रहे हैं. दूसरा एक एंगल है जहां पे आपको क्या एरिया में उसको ट्रेन करना है. इट इज लाइक जिन, वो आप जिन को जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा, है ना. खाली चीज उसको ये मत सिखाना कि मुझे खा जाओ, right? So trainability is the most important thing that is possible in AI. And all these people, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि इसने 200 करोड़ का खर्चा किया, ये big fours are spending millions of dollars on making the AI models and making that. तो वो लोग ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करने, ट्रेनेबिलिटी पे खर्चा कर. मतलब they are training the AI model to be adapted to their environment and it can answer their questions there and then to their team members.
बाहर किसी को ये पता नहीं है, ठीक है। ये सारा मॉडल इनका प्राइवेट है, ये सारी ट्रेनिंग जो है इनकी प्राइवेट है, चाहे वो मॉडल पब्लिक मॉडल हो, आप अपने प्राइवेट लेवल पे उसको ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज वेयर द पेड मॉडल कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो वन इज डेटा सिक्योरिटी। आप बोल सकते हो पेड मॉडल को कि ये डेटा किसी को देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, ट्रेनेबिलिटी। You can train a data set. For example, if I want to train a chat GPT with new law coming in, say, UAE on corporate tax, I can train it and keep that training to myself by feeding that law into chat GPT and telling it कि आप इसको समझ लो, हम इस पे सवाल पूछने वाले हैं। ये ट्रेनेबिलिटी, ठीक है। ये डेटा चैट जीपीटी के पास नहीं है, क्योंकि वो तो सितंबर 22 के बाद अपडेट नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। परंतु आप उसको ट्रेन कर सकते हैं कोई भी डेटा के साथ, जो डेटा आपका है, और उसको आप प्राइवेटली रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये कैपेबिलिटी जो है वो यूनिक है, जहां पे वो प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा को मर्ज करके आपको अपने रिप्लाई बना के देगा, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन एआई इज sustainability, in which people are putting money. Next, 41 हो गया, 40 को खत्म करना। Okay, so with this I would like to conclude my discussion. I have got some few practical examples and all, but we have got paucity of time. I would not be able to take you through those examples. But basically, it can do a lot of analytics, a lot of graphic generation. It will take away RPA, that is robotic process automation. It will take away data analytics. It will take away sampling structures and lot of. So I will, with permission of the next speaker, I am doing it. Actually, Dinesh is my mentor. He has spent so much. We have spent so many years together, and he has been always guiding me कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, and so on. So I am very grateful to him also as a mentor. तो यहाँ पे ये देखिए, हम लोगों ने एक डेटा सेट फीड किया इसमें, एक कंपनी का, और इसको पूछा कि इस डेटा सेट पे सेल्स रजिस्टर है जिसमें जीएसटी का डेटा वगैरह है, ठीक है। इसमें नेट इनकम है। आई वुड नॉट वांट टू शो यू बिकॉज इज अ काइंड ऑफ अ क्लाइंट डेटा। तो इसको बोला कि ये कहाँ से कहाँ तक है, चैट जीपीटी ने पूरा एनालाइज करके दिया। इसमें बिलिंग कोड है, कस्टमर नेम है, फाइनेंशियल फिगर्स है, ये सारा डेटा इसके अंदर है, ठीक है। सो व्हाट इज द सम ऑफ सेल्स, तो उसने तुरंत बताया कि सम ऑफ सेल्स इज 2000 करोड़ व्हाटएवर अमाउंट, right, assuming that this column is a sales column, ठीक है। अब ये डेटा इसको पता चल रहा है कि ये सेल्स कॉलम है, इसलिए ये डेटा है। फिर हमने उसको पूछा कि आइडेंटिफाई द, इट सीम्स दैट द इश्यू इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कॉलम, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला कि ठीक है, मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपका टॉप कस्टमर वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो हमने इसको क्वेश्चन पूछा, सेगमेंट नहीं, कस्टमर वाइज, कैन यू गिव कस्टमर वाइज पाई चार्ट। उसने तुरंत कस्टमर वाइज पाई चार्ट, ये पेड का है सर, ये फ्री में नहीं मिले, ठीक है। तो ये आपका जो पावर बीआई है, ये सारा बीआई सब ये लेके जाएगा सडनली, ठीक है। दीपेश यहाँ में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बंदा है, आप बाद में बात कर सकते हैं उसके साथ। ही इज डूइंग लॉट ऑफ टाइम ऑन एआई एंड हाउ द मॉडल्स वर्क एंड हाउ इट improves. And we have been fortunate as a firm that we built a good small IT team with Dipesh, because हमको लगा कि इसको नहीं सीखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब बहुत हम लोग मिस कर देंगे, है ना। So then we asked him, can you do some customer region wise analysis, मतलब कि कौन से कस्टमर हमारे किस रीजन में है और उस रीजन का हमको थोड़ा एनालिसिस करके दे सकते हो। तो it seems that issue in identifying column that specifies region और location, वो बोल रहा है कि मुझे रीजन और लोकेशन वाला बता दो तो मैं उसको करके दे दूंगा, ठीक है। सो हम लोगों ने बोला कि ये जो कॉलम है ये रीजन का है, तो कॉलम नेम और इंडेक्स शीट स्ट्रक्चर पूरा बना के दिया। ये पाइथन में पूरा कोड भी लिख के देता है उसके ऊपर, राइट। एंड एट द एंड यू डिड ऑल द पाई चार्ट्स रीजन वाइज। सी दिस इज पाइथन कोड, सो समवन हु इज कोडिंग कैन आल्सो यूज दिस पाइथन कोड टू मेक दिस एंटायर मॉडल, डेटा मॉडल फॉर हिमसेल्फ, राइट। तो उसने हमको कैलकुलेट करके दिया नीचे, और उसने एक रीजन वाइज पाई चार्ट भी बना के दिया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये क्या है इसका वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा गलत जा रहा है उसका। सो वी हैव टू फर्दर ट्रेन इट एंड टेल इट कि ऐसा नहीं चाहिए हमको रीजन को
ज्वाइन करके एक रीजन का पूरा डेटा चाहिए। सो हमने उसको बोला कि इसको मिक्स चार्ट करके लो, तो इट इज ट्राइंग टू मेक द मिक्स चार्ट नाउ इमीडिएटली, राइट? सो दैट इज द स्पीड एट विच इट कैन डू लॉट ऑफ वर्क। यू कैन एनालाइज बैलेंस शीट्स ऑफ कंपनीज। आप इसको ऐसे नहीं पूछ सकते रिलायंस खरीदो कि नहीं खरीदो, लेकिन आप रिलायंस का कंपैरेटिव डेटा डाल करके इसको पूछ सकते हो कि ये कंपनी प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं है, और वो आपको तुरंत बता देगा कि ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप इसको पूछोगे कि टाटा टेलीकम्युनिकेशन में पैसा डालूं कि नहीं, ऐसे सब आंसर वो नहीं देगा, राइट? सो एनीवे, सो थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग, and I'm sure this has added value in your practice. And I'm sure everyone, each one of you will go and try certain experiments and use this on day-to-day basis. We have made a small booklet on AI, which will circulate through your study circle on PDF so that you can maybe take a print or whatever. And one thing that we feel and we urge all of you to do is to try and train your team to handle these things, because for them it is more critical. अपना तो चला गया टाइम, जो होना था हो गया, अब आगे के जनरेशन को ये सिखाओ तो उनको काम में आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, recording बंद कर।